I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. हाय गुड इवनिंग, स्वागत है आपका निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक में। आज एक कहानी सुनाती हूँ एंड द स्टोरी इज अबाउट 4 monks. These 4 monks decided that they must go on meditation. It's been quite some time and they want silence in their heart, in their head. So they thought, let's go and meditate for about 10 days without talking to anybody. We'll just sit and quietly meditate. So all these 4 monks, who were friends also, went ahead for the meditation. The whole day they were very happy, meditating blissfully. And as the night progressed, all of a sudden one monk looked at the candle which was flickering and said, "Oh my God, the candle is out." The second one said, he looked at him, opened his eyes and said, "Hey, we are not supposed to talk." The third monk, who was listening to these two, gradually opened his eyes, but then he was full of anger because he got so irritated that he was in his blissful mood. And what did he say? He said, "What's this? Why did you two break the silence? You were not supposed to speak." And in a very short while from then, the fourth monk opened his eyes, smiled to himself, and said, "Wow, I'm the only one who did not speak." Let's reflect on this. Now, when these 4 monks were deciding to do this, they break their silence. When the silence broke, each one of them, there was a different reason of breaking the silence. The first one got distracted because of one aspect of his experience, that was candle. So his attention was on the outside world more than the inside world. So for him, practicing witnessing without reaction, he was not successful. वो इस चीज को सक्सेस नहीं दे पाया कि मैं किसी चीज को होते हुए चुपचाप से विटनेस कर रहा हूं। वो बोल पड़ा। Second monk, he got worried about the others not following the rules, and he thought he was actually practicing the rules. So he was the quickest to judge the others without realizing that he was judging them for the guilty that he was himself in. So उसने ये रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने दूसरे को जज किया उसकी गलती से, लेकिन मेरे अंदर भी तो वही गलती है. So that was the second distraction. Now moving on to the third monk. जो थर्ड मंक था, he let his anger towards both of them, और उसका वो मोमेंटरी एंगर ने उसका पूरे दिन का एफर्ट रुइन कर दिया. दिन भर शांति थी रात को भी, पर वो जो उसे मोमेंटरी गुस्सा आया उसने सारी गड़बड़ कर दी. फोर्थ मंक, he lost his way because he was very proud of himself. उसे इस चीज़ की बहुत दिल से खुशी थी कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, और देखो मैं ही नहीं बोला, ये सारे बोल पड़े. और यही प्राइड उसके लिए इग्नोरेंस थी. फोर्थ मंक को बात करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो सिंपली अपना साइलेंस मेंटेन रखें और चुपचाप उन्हें देख लें, सह लें, कह लें बिना कहे, और वो अपने मेडिटेशन में बिजी रहें? बट हो सकता है देयर आर चांसेस दैट द अदर 3 monks would have started fighting with one another or arguing with one another, and because of this probably the 4th monk would have got disturbed. You know, many of us are like this.
Our motto is, if I'm doing something good, but if nobody is watching me doing good, that means I might not be doing good. So they believe that the reward is not in the effort, but it is in the recognition. There is a beautiful quote. It says, "It is the province of knowledge to speak. It is the province of knowledge to speak. It is the privilege of wisdom to listen." As we learn to truly listen, witness, and observe, without impulsively reacting with distraction, judgment, anger, and pride, and we understand the true meaning of silence. अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे ही हमारे सामने कुछ होता है, हमारा इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन होता है उस चीज़ को लेके। हम जल्दी से उसको तराजू में डाल देते हैं कि ये गलत एक्शन है या ये सही एक्शन है। हम उसके बारे में सोचना भी मंजूर नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला आके हमसे कुछ बात कर रहा है और हम उसकी तरफ देख रहे हैं, और देखते हुए हम मन में वो पुरानी हिस्ट्री हमारी चल रही होती है और हम उस चीज़ों को याद करते हुए उसकी बात को तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमें कुछ क्वेश्चन कर रहा होता है या कुछ बता रहा होता है, और हमारा माइंड उस टाइम उसको सुनने की बजाय उसके आंसर्स ढूंढ रहा होता है, बिकॉज हमारा ब्रेन हमें ये कह रहा होता है अब इसका ये जवाब देना है, हमने इसका ये जवाब देना है, एज इफ वी आर गिल्टी ऑफ समथिंग एंड वी आर ट्राइंग टू सेफगार्ड आवर स्किन। इज दैट करेक्ट? नो। जब हम कहते हैं साइलेंस, तो साइलेंस यहाँ भी उतना ज़रूरी है, साइलेंस यहाँ भी उतना ज़रूरी है जितना कि साइलेंस यहाँ ज़रूरी है। सिर्फ मुंह से चुप रहना और अंदर से परेशान होना, या यहाँ परेशान होना, या मेंटली आप इतना चटर 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 चल रहे हो कि आपकी मन को शांति नहीं है, तो फिर ऐसी मेडिटेशन और ऐसी साइलेंस का क्या फ़ायदा? So there's a lot to learn from this story of 4 monks. I hope this makes sense to you. Thank you so much for being connected with Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thanks for all your love and affection. So let's try and meditate here, here, and here, and here, all through. Thanks. God bless you.